We are a network of academics and allies called the International Solidarity for Academic Freedom in India, and we are here to express solidarity with all the farmers protesting in India today. I support the farmer struggle because the current government is consistently trying to privatize all sectors such as healthcare, industries, academia, railways, and now the farming industry as well. And this must be collectively opposed and resisted. मी एक शिक्षिका आहे, एक आत्या आहे, एक मावशी आहे. मी किसान आणि शेतकरी सोबत आहे त्यांच्या संघर्षमध्ये साथ देत आहे, कारण की तुम्ही माझे अन्नदाता आहे. I'm a product manager from London. I'm supporting the protesting farmers because I believe this is injustice. And we know through Dr. King's famous words that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരിയും വിവർത്തകയുമാണ്. ഞാൻ കർഷക സമരത്തിന് പരിപൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കാരണം കർഷകർ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പൗരാവകാശത്തിനും ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും കൂടിയാണ്. I'm a researcher and I support the farmers' protest because the new laws fundamentally threaten farming subsistence, leaving farmers and our very democracy vulnerable to the demands of large corporations. मैं एक टीचर हाँ ते मैं आज किसानां नाल इसलिए खड़ी हाँ क्योंकि मैनू लगता है कि इस सरकार दी जिहड़ी जंग लोकां दे उत्ते छिड़ी हुई है इहदी आखिरी पड़ाव है. पहला एजुकेशन, हेल्थ, मीडिया, कोर्ट्स, हुण किसानां दे उत्ते भी ते खाने दे उत्ते इन्हां ने हथ मारिया सोच के कि हुण कोरोना है ते इन्नी ठंड है कोई खड़ा नहीं होएगा. ते किसानां ने दिखाता है कि किदां जंग छिड़ी जांदी है ते असी ऐस करके सारे उन्हां दे नाल हैगे आ क्योंकि ये सारियां दी जंग है. I live in California, the United States. I support the farmers' protests in India because the new farm laws they are fighting against will only enrich the billionaires who run the big corporations and impoverish the farmers and the other ordinary people of India. நான் ஆம்ஸ்டர்டாமில் ஒரு பல்கலைக்கழக ஆசிரியர். இந்தியாவில் புதிய பண்ணை சட்டங்களை எதிராக விவசாயிகள் போராட்டத்துடன் நான் ஒற்றுமையுடன் நிற்கிறேன். ஏனெனில் அவர்கள் போராட்டம் நம் நிலத்தில் உள்ள மற்ற எல்லா போராட்டங்களுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. मैं एक रिसर्चर इंग्लैंड में हूँ. मैं किसानों का साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि दिमाग या माइंड का कल्टीवेशन का शुरुआत अनाज के कल्टीवेशन से ही होता है. किसान हर मानव समाज की रीढ़ की हड्डी है. I am an academic in the US and I stand in solidarity with the farmers protesting in India because I am opposed to the new laws that threaten their livelihood and our food source as we know it. నేను ఒక సోషాలజిస్ట్గా రైతు బిడ్డగా మోడీ తెచ్చిన 3 చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తున్నాను. రైతు పోరాటాలకు పూర్తి మద్దతునిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ కొత్త చట్టాలు భవిష్యత్తులో రైతుల్ని కొత్త కార్పొరేట్ బానిసలుగా మార్చబోతున్నాయి. હું એક શિક્ષિકા છું અને હું કિસાનોના શેતકરીઓના સંઘર્ષમાં એ માટે સામેલ છું કે તમારી આઝાદીથી જ મારી આઝાદી જુડેલ છે અને તમને ગુલામ બનાવનારો કાયદો એ મને અમાન્ય છે. અને જેવી રીતે કે બીજા મુલ્કોના જે એક્ટિવિસ્ટ એ કહે છે ને કે મારી આઝાદી તમારી આઝાદીથી જુડેલ છે. My liberation is bound up with yours. The government should immediately withdraw the new farm laws and instead seriously address the crisis that has been devastating the lives of Indian farmers for more than 3 decades.